Assalamu alaikum students. Today in the course of positive psychology, we will learn wisdom and its theoretical perspective. Defining wisdom. Wisdom is defined as the ways and means of planning, management and understanding a good life. So, if a person understands his or her life and he is aware of the meaning and purpose of his life, and he or she plans and manage their life accordingly, or in the light of the goals he or she has set, or in the light of the understanding he or she has developed, then he will be considered as an intelligent person. It means he or she is having sufficient wisdom and he knows how to plan and how to manage that thing in daily life. तो wisdom में वो सारे तरीके आ जाएंगे जिनके थ्रू एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसको प्लान करता है प्रॉपरली जिस तरह करना चाहिए. We have to function in different domain of our life and each domain requires appropriate and accurate planning and management. तो हमें उस लाइफ डोमेन से रिलेटेड हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर इसके बाद हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको हर डोमेन में प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं एक्टिविटीज को, सो दैट वी कुड लीड अ गुड लाइफ. तो फंक्शन जैसे फैमिली डोमेन है आपका, वर्किंग डोमेन है आपका, सोशल डोमेन है, और इन ईच डोमेन ऑफ लाइफ यू नो हाउ टू प्लान द थिंग, हाउ टू डू द टास्क, हाउ टू मैनेज द लाइफ एंड हाउ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद द फिनोमेनन और सिचुएशन. तो जब ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, मैनेजमेंट होगी, प्लानिंग होगी, तो ही हमारी एक लाइफ जो बेहतर होगी. तो विजडम जिन लोगों के पास होती है, दे नो हाउ टू लीड अ गुड लाइफ. विजडम इज एन एक्सपर्टीज इन कंडक्ट एंड मीनिंग ऑफ लाइफ. सो इफ यू हैव अ विजडम, then you will be able to make your life meaningful. You will be aware of the do's and don'ts. You will be aware of what to do and not to do, and you will differentiate right from wrong as well. So you will set the goals according to your aptitude and the resources, creative intellectual resources you have been blessed by Allah Almighty. So you will be able to utilize all of your potentials. तो आपको पता होगा कि आपने अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना. You will be expert in that. तो wisdom होगी, then you can do something and you will avoid something. तो ये सारी जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं, these actions are dependent on the wisdom. There are given criteria which characterize wisdom, excellence and wisdom related performance. So there are some criteria have been set to perform in different domain of life. So wisdom, some characteristics are essential to increase the wisdom, and when talk about the wisdom, we need to focus on different aspects of the wisdom and on all those things which determine wisdom or which can increase our level of wisdom, and how to perform different tasks which require wisdom. So उसके सबके लिए criteria set है कि wisdom related जो performance है वो किस पर बेस करेगी criteria. तो हमें उन criteria को understand करना है और we have to perform following all those criteria. Number 1, factual knowledge. Factual knowledge refers to the knowledge about topics such as human nature and development, individual differences, social relations and norms, etc. So factual knowledge is related to address the question, what is that? Because when we want to inquire what is that, then we will try to gain the factual knowledge. So factual knowledge helps us in understanding the human nature and his or her development. What kind of attitude a person exhibit in a certain situation, how a person behave, feel and think in a certain way, what make a person different from rest of the people. So we through factual knowledge we are aware of the human nature, how human personality is shaped or developed during different phases of life, how behavior is developed, how different habits are shaped in a specific environment, how a person physically, emotionally and socially developed throughout the life, and what kind of the differences exist among people. We people physically different from each other, we are psychologically different from each other, and we also socially different from each other. So factual knowledge will help us in gaining understanding regarding the individual differences. And then what kind of relationship exists in a specific society, what kind of relationship we require to lead a normal life, how relationships are formed, established, and what
make our relationship strong, and which kind of thing strengthen our relationship, social relationships, and how social relationships help us in leading a good life, and what make our relation, what improve the quality of our relationships. And as well as we are also aware of the norms and the values. In order to differentiate between right and wrong, we have to lead our life following social values, norms, religious norms. हमारे बहुत से religious norms होते हैं, हमारे सोसाइटी की वैल्यूज होती हैं, फैमिली वैल्यूज भी होती हैं, हमारे जिस कल्चर में हम होते हैं, हमारे कल्चर नॉर्म्स होते हैं, and we should be aware of that. So factual knowledge will address the question what, it will provide the answer of the question what is that. So through factual knowledge we will be aware of the human nature, is there a development, all kinds of differences, social relations, social values, norms and other so many things. और हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है, क्यों होती है, क्या है, किस तरीके से है. Factual knowledge strengthen our wisdom, and when we talk about the wisdom, so factual knowledge should be there. जब आप किसी पर्सन की एबिलिटी को डिस्कस करते हैं, उसकी विजडम को, कि हाँ इसके पास विजडम है, तो we will judge that person based on the factual knowledge he or she is having. तो अगर उसके पास ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है, even he or she couldn't tell about all these things, तो फिर उसकी जो factual knowledge इतना लैक कर रहा है, तो फिर वहाँ पर wisdom जो है वो तो ये concept doubtful हो जाए. Number 2, procedural knowledge. Procedural knowledge refers to knowledge of how developing strategies for dealing with problems and giving advice, resolving life conflicts, and planning and overcoming obstacles that could solve problem solution. So procedural knowledge will address the question of how. कैसे करेंगे आप इसको. Procedural knowledge help us in resolving different kind of issues we encounter in our daily life. So procedural knowledge will help you how to resolve a specific problem, how to use that specific kind of strategy to target an issue. So with the help of procedural knowledge, we will be able to develop the strategies through which we will be able to solve a problem, deal a problem. Procedural knowledge serve as an advice for us. Through procedural knowledge, we will be able to resolve daily life issues, minor level issues, and even procedural knowledge we can also resolve major life problems as well. So during different life stages, different kind of conflict arises, and procedural knowledge also guide us how to resolve that conflict. तो वो कॉन्फ्लिक्ट चाहे आपकी फैमिली लेवल पे, फैमिली में हो रहा है, घर से बाहर हो रहा है, किसी सोशल सर्कल में हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट्स. you will generate the strategies and effective strategies in order to solve a specific kind of problem. So through procedural knowledge, you will also be able to plan for future, कि किस तरह हम प्लानिंग कैसे करनी है लाइफ की. जैसे आप गोल सेट करते हैं ना, एकेडमिक गोल सेट करते हैं कि मैं ये करूंगी, मैं इस तरह पढ़ाई करूंगी, मैं क्लासेस लूंगी, अपनी स्टडीज पे फोकस करूंगी, फिर मैं इस तरह की बुक लूंगी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं मैंने आंसर करूंगी. तो आपकी जो डिफरेंट प्लानिंग होती है कि आपने अपनी फैमिली लाइफ के साथ आपने अपनी एकेडमिक लाइफ को कैसे लेके चलना है, एकेडमिक टास्क को कैसे फुलफिल करना है. तो ये सब क्या रिक्वायर्ड है विजडम, और आपका ये कैसे चीजें पूरी होंगी आपकी प्रोसीजर नॉलेज से. एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स that could thwart problem solution, and you will also try to overcome obstacle. You will try to remove all those hurdles which couldn't solve the problem, और आपकी जो due to those obstacle and barrier you cannot solve a specific problem, you cannot apply a specific strategy to target a specific kind of problem, so you cannot achieve a desired result if some significant obstacle and barriers are there. तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपके अंदर एबिलिटी मौजूद है, तो आपके पास प्रोसीजर नॉलेज है, then you will be able to overcome all those barriers and so that you can resolve a problem and you solve an issue. तो अब प्रोसीजर नॉलेज आपको हाउ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप कर रहा है. फैक्चुअल नॉलेज क्या था, व्हाट, क्या आप सारी चीजें से अवेयर हैं, आपको पता है, एंड प्रोसीजर नॉलेज क्या कर रहा है, हाउ, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे. लाइफ में कोई इशू है, फैमिली में है, फैमिली से बाहर है, फाइनेंस को
आपने करना है, जनरेट करना है, आपने उसको में फैमिली फाइनेंस को मेंटेन करना है, अपने फैमिली को प्लान करना है, अपने एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने हैं, वर्क प्लेस पर आपके बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, देन यू हैव टू सेट द प्रायोरिटीज, हैव टू प्लान द थिंग। समटाइम्स यू हैव टू प्लान द डेली रूटीन, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी होती है, तो किससे करेंगे? थ्रू प्रोसीजर नॉलेज। तो प्रोसीजर नॉलेज अगर है, उस क्राइटेरिया पे आप जज करेंगे कि पर्सन की जो है विजडम कैसी है। लाइफ स्पैन कंटेक्चुअलिज्म, वाइज पीपल कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल लव, वर्क एंड प्ले, कल्चर वैल्यूज एंड द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन reviewing problems and their associated solution. So wise people always try to understand the thing and issues in the context of life. So whenever they encounter a problem, they first try to understand the nature of the problem, then will identify or generate the strategies, and so that they could solve the specific issue. So they understand, they gain the knowledge in the context, and they always interpret the thing in the light of the context the event occur or the things happen. For example, they make connection of information with love, domain, work and play. So they will see this problem is specifically associated with the loving relationships, and this problem is associated with the work, and this the working domain requires such type of thing or effort, and I have to do that task to make myself productive in workplace domain. Then these things are required to play and enjoy the life. These things are required to enjoy a loving and healthy relationships. तो वो जो कंसीडर करते हैं ना चीजों को, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इन्फॉर्मेशन को, ऐसा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है तो देखते नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किससे रिलेट कर रही है। दे इमीडिएटली इंस्टेंटली इंटरप्रेट द सिचुएशन इन एन इन्फॉर्मेशन, और फिर वो क्या होता है, उनसे एरर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो लाइफ के कॉन्टेक्स्ट को वो देखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर उनके पास होती है, नॉलेज लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसको डील करते हैं, तो वो देखते हैं कि किस डोमेन में, किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस काम को करना है, एक सिचुएशन को दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो ये वाइज पीपल यूजुअली अवेयर ऑफ दैट। दे आल्सो आर अवेयर ऑफ द कल्चर values. They know how to follow the values, how to follow the norms, societal norms, because one thing is acceptable in one culture, but the same thing, same behavior will not be acceptable in another culture. जैसे suppose आप जिस situation में हैं तो वहां पर आप एक तरह की ड्रेसिंग करते हैं, आप एक तरीके से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ती है, आपको उसी कल्चर के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है या कोई विजिटर्स पाकिस्तान आते हैं, व्हेन दे विजिट द मॉस्क, सो देयर गेटअप इज अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस। के जैसे हमें पता है कि वो लोग जब आते हैं तो मस्जिद में जाते हैं, बादशाही मस्जिद का, शाह फैसल मस्जिद का विजिट करते हैं। तो जब वो फॉरेन होते हैं, हालांकि वो मुस्लिम भी नहीं है, लेकिन जब वो मस्जिद में जाते हैं तो उनकी फीमेल जो होती है उन्होंने सर पर स्कार्फ लिया हुआ होता है, उनके कपड़े भी इसी के अकॉर्डिंगली, तो वो कपड़े नहीं पहनते कि जो उन्होंने अपने कल्चर में पहना है। तो उनको पता होता है कल्चर वैल्यूज हैं, ये इनकी रिलीजियस वैल्यूज हैं, इनकी सोसाइटी है। तो वो इन चीजों को जब लोग डिफरेंट कल्चर में जाते हैं तो यूजुअली जो वाइज पीपल होते हैं, दे नो हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ whenever they enter different society, and then they have to visit different culture, different places, religion places भी होती है। इसी तरह फैमिलीज हो तो वहां जाते हैं तो उनके एटीट्यूड, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाता है। तो वाइज पीपल जो है दे आर ऑलवेज केयरफुल अबाउट दैट, एंड दे आल्सो रिव्यू द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, एंड they also consider the associated solution with the problem. So it means wise people are able to understand the problem, they are able to generate the effective solution of the problem, they will evaluate all solution one by one, and then they will try the solution out in the real life so that they could get the desired result. So उनको वो problem को भी review करते हैं, वक्त के साथ चीजों को review करते हैं, problems को review करते हैं, उनसे associated
सोल्यूशन को भी रिव्यू कर। नंबर 4, रिलेटिविज्म ऑफ वैल्यूज एंड लाइफ प्रायोरिटीज, प्लेस द वैल्यू डिफरेंसेस अक्रॉस पीपल एंड सोसाइटीज इन पर्सपेक्टिव। सो वाइज पीपल also consider the differences exist in the values and they know how to set the priorities, how to set the life priorities. वो लोगों के डिफरेंट लोगों से मिलते हुए उन्होंने किस चीज को वैल्यू देनी है, किस चीज को कहाँ पे इम्पोर्टेंस देनी है, सोसाइटीज में किस तरीके से उन्होंने लेकर चलना है, डिफरेंट सोसाइटीज में किस तरह वैल्यूज हैं, वैल्यू डिफरेंस का किस तरह ख्याल रखना है, प्रायोरिटीज का किस तरह ख्याल रखना है, वो उसको वाइज पीपल आर अवेयर ऑफ दैट। तो विजडम जो होती है ना, विजडम हेल्प यू इन सेटिंग द प्रायोरिटीज कि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है, यू हैव टू फंक्शन एट पर्सनल लेवल, यू हैव टू फंक्शन इन सोशल सेटिंग, you have to get along with your family as well. So you have to fulfill family responsibilities, workplace responsibilities, you have to fulfill social responsibilities. So while handling multiple tasks, you need to set the priorities कि आपकी लाइफ के डिफरेंट फेसेस हैं, क्या चीज पहले आनी है, आपने किसको वो करना है, कि किसको इंपॉर्टेंस देनी है। कि जैसे आपकी जो स्टडी का एक ड्यूरेशन होता है, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड योर फोकस इज ओनली योर स्टडीज, क्योंकि आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, एजुकेशन है। फिर उस पर्सन की जो है वो जॉब के लिए वो जाता है, उसको पता है कि मेरी ये प्रायोरिटी है, मैंने इसको करना है, फिर वो जॉब करता है, फिर शादी होती है, फिर उसकी फैमिली है। अब फैमिली डोमेन है कि वर्क प्लेस डोमेन है, तो वहां पर फिर उसको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि भाई ये चीज मुझे अब करनी है, ये चीज मुझे इस तरह करनी है, और डिफरेंट वैल्यूज को कैसे जो है वो फॉलो करना है। कि डिफरेंट एक पर्सन से आप मिलते हैं, डिफरेंट वैल्यूज की वैल्यू डिफरेंस है, दूसरे के साथ मिलते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, सोसाइटी के डिफरेंस आ जाते हैं। तो wise people always consider all these differences and they know how to make their life organized and up to the standard of a good life। के जैसे आपकी जिंदगी एक अच्छे स्टैंडर्ड की, एक अच्छी जिंदगी क्या होती है, आपने उसको करना है। आपके डिफरेंट डोमेन्स हैं, उसमें आपने प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है and how to manage all these things। Number 5, managing uncertainty provides the decision making flexibility that is necessary for processing difficulty information and coming up with appropriate solution. So many times you face uncertainty and in some situation you have to decide what to choose and what to not. So that your decision making ability also depends on the level of your wisdom. So wise people before making decision think a lot about a specific situation. Even they get appropriate information in order to process the thing. So they receive difficult information and then they have to process it. They have to understand. They have to judge it. They have to reason out that. And they have to interpret the received information so that they can think about the appropriate solution to have the desired results. तो उनके लिए वो decision making flexibility जो है वो देखेंगे आपके वो process कैसे करते हैं कि information life में आई है and that is difficult information means a person doesn't know how to resolve and what to choose, what will be beneficial for his or her future. तो हमने जो decision life में लेने होते हैं ऐसे लेने होते हैं कि वो हमें short term में भी benefit दें और long term में भी benefit दें। तो हम बाजू का एक uncertain situation आपके सामने आ जाती है कि complicated situation है but you have to manage that। तो life में जो complications होती, complicated situation है, we also have to resolve that। तो ऐसा नहीं हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए decision making required है और decision making depends upon the process and your ability to judge a thing or interpret an information you have received from the surrounding। हमें इससे बहुत सी information मिलती है, difficult है, हमारे पास already जो knowledge है that is insufficient to resolve a specific kind of problem। तो वो जो uncertainty create हो गई है, we have to overcome that, we have to resolve appropriate solution to find related to the specific problem। तो managing uncertainty भी wisdom पर depend करती है। wisdom वो तो person जो है वैसे decision making के अंदर flexibility नजर आएगी, वो information को handle करेगा so that he can arrive at conclusion। तो वो उसका एक नतीजे पर पहुंचेगा और appropriate solution वो find out करेगा और उस uncertain situation को manage करेगा। Theories of wisdom, wisdom often is referenced in ancient maxims and in philosophical reviews. So you will find the wisdom in that practical and philosophical literature is available. So Greek
Greek philosophers also discussed the nature of the wisdom and how we can exhibit wisdom in our daily life. So you will find it in ancient literature and the sayings and quotes available related to the wisdom. Western classical dialogues reveal three distinct conceptualization of wisdom. So in Western literature, researchers and theorists conceptualize the wisdom in three different ways. They discuss the wisdom in detail and pose three different kind of characteristics and concepts related to the wisdom. The first one that found in person seeking a contemplative life. So person who think or evaluate or judge the life from different angles and he or she has different thoughts related to the life. वो कहते हैं गौर फिक्र करने वाली एक होती है कि person thinks about the life so that he can make necessary changes in quite lead a good life and a happy life or meaningful life. कि एक person अपनी life के वाले से गौर फिक्र करेगा, सोचेगा, he will think about his own self and think about the different circumstances of life. तो वहाँ पे wisdom नजर आएगी. When person will be thinking about own life and he pays attention at different aspects of the life, then you will consider him as a wise person. So wisdom can be seen in people who try to find out how they make their life worthful, meaningful, purposeful. So they keep thinking about the life. So उनकी जो है ना वो गौर फिक्र करते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में. ऐसा नहीं होता कि बस एक लाइफ है तो बस खाया पिया. सोचते हैं कि उनकी लाइफ क्यों है, वो क्यों इस दुनिया में है, किस लिए है. That of a practical nature as displayed by great statesmen. So you can also the wisdom in form of the practical statements given by different people of the society and वो उसकी बड़ी practical nature आपको नजर आएगी wisdom की कि जो हमें लगती है कि भाई ये चीज कही गई है, ये गई है, ऐसे हुआ है. किस तरह की बातें हमें जो वर्ड्स मिलते हैं ना सुनने को, बड़े इंटेलिजेंट हमें मतलब कोट्स आपको मिलेंगी इंटेलिजेंट जो आपके अंदर वर्ड्स हैं कि जो थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स होते हैं लोगों के वो प्रैक्टिकल नेचर आपको विजडम की नजर आई. इसी से बहुत से फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से ऐसे वर्ड्स कहे हैं, ऐसी चीजें कही हैं, उनके एक्शंस, उनको जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है तो वो उससे पता चलता है कि they were wise people. Then scientific understanding. So wisdom can be understood by the scientific lens, using scientific lens. So scientific evidences and empirical studies also make you able to gain insight in what wisdom is. तो wisdom है क्या, तो जितना scientifically उसको understand करेंगे, जितने लोग करते हैं, जो audience भी उसको देखती है, understand करती है उस nature को, तो वो फिर wisdom नजर आएगी. तो तीन तरह के different उन्होंने conceptualize किया है कि person को देखकर आपको पता चलेगा कि wisdom ये होती है, practical nature आप उसकी होगी, और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जितनी ज्यादा डेवलप होगी तो वो दैट इज द साइन ऑफ विजडम. Aristotle added to the list of type of wisdom by describing theoreticals, the theoretical thoughts and knowledge devoted to truth, and distinguishing it from the phronesis, practical wisdom. So Aristotle, while discussing the wisdom, shed lights on two different aspects of the wisdom. Theoretical thoughts and knowledge, when person is devoted to find the truth, then he will see it different, consider different perspective related to a phenomenon or a thing. So he will explore different things, he will search the knowledge so that she can find the truth. तो जब एक डिवोशन है ना आपकी कि आपने सच की तलाश करनी है, तो आपकी थ्योरेटिकल थॉट्स और नॉलेज भी उसी से रिलेटेड होगा कि पर्सन विल कीप थिंकिंग अबाउट दैट एंड ही will be in the search of the knowledge that prove something and that is related to the truth. कि सच्चाई की तलाश में, एक सच की तलाश में है. And Aristotle also distinguished it from the practical wisdom. So phronesis is different from the theoretic case. कि एक जो है एक aspect that is related to the theoretical perspective and another one is related to the practical thing. So first we have to gain the knowledge and appropriate information, true information, and then we are also required to
do something in real life, we have to perform something. कि एक तो आप कहते हैं ना कि सोच, आपके पास एक नॉलेज है तो फिर आपने उस पर अमल भी तो करना है, तो प्रैक्टिकल विजडम भी तो है. तो प्रैक्टिकल विजडम इज समथिंग एल्स एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द विजडम इज समथिंग एल्स. सो अरिस्टोटल discussed both aspects of wisdom in detail, and he also has distinguished or one thing from the another concept. Philosophers, theologians, and culture anthropologists debated the philosophical versus pragmatic application of virtue along with the divine and human nature of the qualities. So, philosopher, theologist, culture anthropologist discussed the virtues in detail, different virtues in detail, and they also talk about the practical implication of that virtue in real life. So a person who is aware of something and who wants to make himself a good person, improve himself as a good person, and he want to lead a virtuous life, then he also need to apply all these things in practical life. के ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही हैं. तो करेंगे इसकी philosophical versus pragmatic application की एक virtue है, ये wisdom है. So, philosophers and theologians not only talk about the different philosophical perspective of the wisdom, but they also discuss how we can apply wisdom in daily life. So, virtues जो होता है वो उसकी एक आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं, और दूसरा उसकी प्रैक्टिकल जो नेचर होती है ना, उसकी एप्लीकेशन कि आप कैसे उसको करेंगे, उसको भी उन्होंने डिस्कस किया है. और जिसमें ह्यूमन नेचर जैसे क्या क्वालिटी एक पर्सन को क्या चीज डिफरेंट करती है, उसकी लाइफ को कैसे एक अच्छी लाइफ, उसको एक अच्छा इंसान बनाती है, इसकी एक गुड लाइफ क्या होती है, तो वो उसके साथ उन्होंने कनेक्ट करके इसको डिस्कस किया. Both issues related to the question of whether wisdom is a form of excellence in living as displayed by ordinary people or in more aptly seen as a fuzzy philosophical quality possessed only by sages. So a question arises in our mind that if we consider a person as a wise person, so what kind of quality he or she needs to exhibit? क्या हम इसको ये कहेंगे कि काम आदमी है, he is practically applying wisdom and in order to improve his or her life, हम उसको देखें कि वो उसको वर्च्यू की तरफ वो एक वर्चुअस लाइफ गुजारना चाहता है और एक विजडम को एक आम आदमी यूज कर रहा है, तो क्या हम उसको जो एक्सेलेंस उस अचीव कर रहा है, तो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है with the use of wisdom. So should we consider these people as wise people, or wisdom can be seen only in the saint or sages, कि वो ऐसे लोग जो philosophical qualities जिनके अंदर हैं, जो एक थॉट प्रोवोकिंग काम करते हैं, उनके वर्ड्स थॉट प्रोवोकिंग होते हैं और वो इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं, तो क्या हम उन्हें जो है वो वाइज कंसीडर करें? तो ये इश्यूज जो हैं वो इस क्वेश्चन को डील करते हैं, इससे रिलेटेड हैं. लेकिन अगर हम देखें तो वी कैन ऑल्सो increase our wisdom through the knowledge we gain in daily life, and when we gain factual procedure knowledge and other kind of knowledge related to almost everything, then we can prove ourselves wise people, and on the other hand we can properly utilize that obtained knowledge in real life in order to prove that we people are able to utilize the information and knowledge in appropriate way to improve our life. तो क्वालिटी लाइफ की इम्प्रूव होती है. तो एक नॉलेज आपके पास है, कहते हैं ना कि इल्म जो है वो सिर्फ काफी नहीं होता, इल्म के साथ अमल. आप ये समझ लें कि अगर विजडम है, व्हेन यू कंसीडर अ पर्सन एज अ वाइज पर्सन, सो ही और शी विल बी एबल to gain the knowledge, accurate knowledge, he will accurately interpret the information, and then he or she will use that knowledge, information practically use that information in order to improve the quality of the life, in order to resolve the issues. तो वो अपनी अकल को एक तरफ उस पर इल्म है और दूसरी तरफ उस पर वो अमल कर रहा है. तो दोनों चीजें जो होंगी विजडम
में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, और दोनों अमल और इन दोनों की बेसिस पर आप किसी पर्सन को वाइज पर्सन कह सकते हैं. Through a multidimensional scaling, 3 dimensions of wisdom have been identified. Theorists and philosophers and scientists have identified 3 different dimensions of wisdom based on the multidimensional scaling. The first one is effective empathy and compassion. So wise people will exhibit empathetic feeling toward others, and they also have desire to provide support to all those who are facing problematic situation and who need help during adverse situation. So effective state है, empathetic feeling develop होंगी, wise people हैं उनके अंदर होगी. एक इसके साथ बैलेंस के साथ जो empathetic feeling होंगी, compassion की feeling होंगी, तो इनकी effective state जो है बड़ी positive होगी if they are wise. Second, reflective intuition and introspection. So wise people can predict something. वो intuition की ability होती है, इल्हाम की ability, जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं लोगों को और उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं. इंट्रोस्पेक्शन उनकी जो है वो स्ट्रांग होती है. मुशाहिदा बातिन कहता है ना, आपके जो आपके अंदर क्या चल रहा है, दे कैन प्रिडिक्ट दैट. तो वाइज पीपल जो हैं वो बड़े रिफ्लेक्टिव होंगे कि उनकी इंट्यूटिव एबिलिटी होगी उनके अंदर. दे कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ human being. They can predict something about the future. They can understand what is going on inside a person. तो ये हम ये नहीं कह सकते कि इनके पास कोई गैब कल्म होता है, but they are wise enough to understand human nature. इनके अंदर एबिलिटी होती है, अंडरस्टैंड करते हैं. क्योंकि नॉलेज भी तो है ना, आप देखें ना, फैक्चुअल प्रोसीजर नॉलेज भी तो समझा है ना किस तरीके से होगा. तो वो ये एप्रोप्रिएट नॉलेज होता है. एप्रोप्रिएट नॉलेज फिर दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंस. दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम. तो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उससे उनकी ये जो एबिलिटी उनकी स्ट्रांग होती है, एबिलिटी जो होती है, स्किल डेवलप होती है इनके अंदर. दैट्स वाई इनके अंदर रिफ्लेक्टिव आपको विजडम उसके जो एक डायमेंशन मिलेगी, रिफ्लेक्टिव भी मिलेगी. कॉग्निटिव एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस. सो wise people will perform well on cognitive task and the task that requires intelligence. इनका IQ level और आप इसको emotional IQ भी आप consider कर सकते हैं. इनका जो है वो हाई होगा और इनकी जो cognitive abilities होंगी, capacities होंगी, these capacities also work properly and accurately. तो जो वाइज पीपल हैं उनमें विजडम, जब आप किसी पर्सन को कहेंगे कि वाइज है, तो देन यू विल इवैल्यूएट दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ 3 different scales and the dimension of the wisdom. You will evaluate or examine his or her affective states, reflective states and cognitive state as well. तब आप जाकर कहेंगे this person is the wise person. In another study, 6 qualities of wisdom also have been identified, including. So researchers also have found out, identified 6 qualities associated with the wisdom. When you consider a person as a wise person, then you need to search these 6 qualities in that person. Reasoning ability, a wise person is able to reason out something. He will interpret the thing. He will evaluate and see the appropriateness of the information he or she has received from the external world. So he is able to reason out a situation. He will not be aggressive or out of control to listen something or to know something and to see something. कि वो कहते हैं ना कि जो एकदम से कोई चीज देख के हो गए और एकदम से सुन के कुछ हो गए. They will try to, wise people always try to reason out the situation, reason out and interpret the situation. Number 2, sagacity, profound knowledge and understanding. So wise people will acquire factual and procedural knowledge and other kind of knowledge so that they can have understanding related to a phenomenon, situation or a person.
तो इनके पास वो जो नॉलेज होगा, दे विल यूटिलाइज दैट नॉलेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का कोई बिहेवियर भी है या कोई सिचुएशन भी अगर ऐसी है, तो इनके पास जो इतना नॉलेज होगा कि ये उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो ये वाइज पीपल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ sagacity यू कैन डिफरेंशिएट वाइज पीपल फ्रॉम अनवाइज पीपल। Number 3, learning from ideas and environment. Wise people try to learn from the different ideas and the environment. ये जो wise people होते हैं, ये experiences से बड़ा सीखते हैं, और ये जो different object है ना, non objects, उनसे भी सीखते हैं। जैसे जो wise होगा ना, वो पत्थर से भी सीखेगा, वो चांद से भी सीखेगा, वो सितारों से भी सीखता है, वो आसमान से सीखेगा, वो प्लांट से सीखेगा, वो हर चीज से। तो इनके पास जो आइडियाज होते हैं, इनके पास जो आइडियाज हैं एंड आइडियाज ऑफ अदर, दे लर्न फ्रॉम द आइडियाज एंड दे लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, द लिविंग वर्किंग एनवायरनमेंट जो भी है, सोशल एनवायरनमेंट, दे आल्सो लर्न फ्रॉम दैट। तो इनकी लर्निंग कभी रुकती नहीं है, ये बड़े ओपन होते हैं, ओपन टू लर्न समथिंग। तो वाइस है, इसीलिए तो डिफरेंट चीजों से सीख रहे हैं, आइडिया से सीख रहे हैं। जज, दे कैन जज समथिंग एप्रोप्रिएटली। तो वो कहते हैं कि वेल जजमेंट इनकी हो सकती है। 100% देखिए एक्यूरेट किसी की नहीं होती है कि ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम ये नहीं कह रहे कि 100%, नॉट इन ऑल सिचुएशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे जज द सिचुएशन, दे जज the person in appropriate way, accurately, और appropriate judgment जो है वो इनकी होगी, चीजों को समझते हैं बहुत। Expectations, so they can expect something, but they know how to maintain the balance in expectations। तो ये एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट करते हैं, वाइज पीपल है ना, तो वाइज पीपल पे अटेंशन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, सो they expect something good even from the problematic situation। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन है, तो इन एक्सपेक्टेशन में बैलेंस होता है, वो रियलिटी बेस्ड एक्सपेक्टेशन इनकी होती है। जो भी आउटकम ये एक्सपेक्ट करते हैं तो रियलिटी बेस्ड होते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू सी द बोथ साइड ऑफ द पिक्चर। कुछ लोग होते हैं ना कि वो एक साइड देखते हैं, लेकिन वाइज पीपल जो होते हैं ना, दे पे अटेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ अ पिक्चर, की दोनों रुख तस्वीर के देखते हैं, समझते हैं उसको, इसीलिए इनकी जजमेंट भी अच्छी होती है। पर्सपिकेसिटी, एक्यूटनेस ऑफ डिसेंटमेंट एंड परसेप्शन। सो इनके अंदर एक बसीरत होती है कि ये चीजों को समझते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड वेल, दे कैन परसीव वेल। तो इनकी जो है ना, ये एक बसीरत इनके अंदर होती है कि चीजों को समझना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, परसीव कैसे करना है। सो दीज 6 क्वालिटीज मेक अ पर्सन वाइज in different situation. So and on the basis of these 6 qualities you can make difference among people, and you can examine the level of judge the level of the wisdom. तो wisdom को अगर आपने देखना है तो ये सारी qualities आपको देखनी होंगी, then you can say this person is a wise person. The meaning of wisdom also is communicated in our everyday language. So we can also understand the meaning of wisdom through the communicative style or the word, phrases, statement we use in daily life while communicating with each other. Explain the explain the meaning of the wisdom. तो wisdom को आप daily communication के जो वर्ड्स है, जिस तरह हम करते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये इसका मतलब क्या, विजडम होती क्या है। In cultural, historical and philosophical context, wisdom, when you see the wisdom from the cultural, historical and philosophical point of view, then we could understand the wisdom as wisdom that it addresses important difficult matters of life. So wisdom is required to deal with difficult life situations. So
when you have to address difficult question, when you have to find out the solution of a complicated or difficult situation, when you have to deal with the difficult life circumstances, then wisdom should be there, and wise people find the appropriate, not all the time, but most of the time they find the accurate and appropriate answer of a difficult question. They are able to deal with life issues, problems. They able to generate the effective strategies to target a specific problem. Wisdom involves special or superior knowledge, judgment and advice. So we can also explain wisdom in the context of the knowledge we acquire. So this knowledge will be a superior knowledge, not will be the ordinary knowledge. That knowledge will be special and superior knowledge. Superior knowledge या special knowledge के जो आपको डिफरेंट बनाता है दूसरों से. एक तो नॉर्मल रूटीन में आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी है? यू आर अवेयर ऑफ दैट. आपके पास सुपीरियर नॉलेज भी है, स्पेशल नॉलेज भी है. तो ये नॉलेज होगा सुपीरियर, दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल. सो वाइज पर्सन also acquire special and superior knowledge, and then that's why they are able to judge a situation, and उनकी judgment बड़ी अच्छी होती है because they have appropriate knowledge related to something. और अगर नहीं है, they will acquire the knowledge and further information to clarify the confusion, कि उसको अगर एक चीज है complicated है तो उसको judge करने के लिए. ऐसा नहीं है कि एकदम instantly they will make judgment about something, ऐसा नहीं है. And they are able to advise others. के एक person जो है वो wisdom अगर आपके पास है तो you can advise other how to behave, how to feel, how to think. तो how to deal with the situation. आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके किसी खानदान में होते, बड़े होते हैं, कोई बहुत एक दो लोग बड़े समझदार होते हैं. लोग जो है ना उनके पास जाते हैं, अपने इश्यूज जो होते हैं ना उससे रिलेटेड उनकी ओपिनियन लेने, उनके सामने डिस्कस करते हैं. फिर वो अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपनी एबिलिटी, अपनी विजडम की बेस पर उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा कर लें, इस तरीके से कर लें. तो पीपल फाइंड सोल्यूशन फ्रॉम दीज वाइज पीपल. तो वो उनसे आपको क्यों मिलती है? जब उनके पास विजडम होती है. तो यू कैन अंडरस्टैंड विजडम in a specific culture, and you can also understand these two important aspects of the wisdom through cultural, historical and philosophical perspective. The third point we need to understand or consider in the context of wisdom, that wisdom reflects knowledge with extraordinary scope, depth and balance applicable to specific life situation. So wisdom is related to the knowledge with extraordinary scope. कि कोई आपके पास ऐसा knowledge है कि उसका scope बड़ा ज़्यादा है. You can apply that knowledge in variety of setting, and you can get benefit from that knowledge in variety of ways. So आपके बहुत एक जो वास्ट है वो knowledge आपके पास. You can solve different kind of issues through that knowledge. तो wisdom आपको वो इस तरह के knowledge को reflect करती है. That is essential to solve multiple problems. तो डेप्थ में आपके पास चीजें पता होंगी, और बैलेंस जो है वो आपने किस तरीके से उसकी स्पेसिफिक लाइफ सिचुएशन को डील करते हुए उसको किस तरह बैलेंस के साथ आपने करना है. जैसे सपोज एक पर्सन कहता है, आप उससे उसके सामने एक कोई जैसे डस्टर हम क्लास में यूज करते हैं, तो वो डस्टर अगर उसके सामने उसे पूछा जाएगा है तो एक पर्सन कहेगा कि हाँ ये जो है ना इसकी शेप ये डस्टर है और इसकी शेप इसका कलर ये है. लेकिन कोई पर्सन होगा जो बताएगा देखें यहाँ से ऐसे है, इधर जाते हैं, इसकी शेप इस तरह बना हुआ है, ये इस मटेरियल का बना हुआ है, ये इतनी देर चल सकता है, ये इससे ये काम लिए जा सकते हैं. तो वो उसके पास जो नॉलेज होगा ना वो बड़ी उसका स्कोप वास्ट होगा, डेप्थ में नॉलेज होगा. और एन इंटेलिजेंट पर्सन नो हाउ टू यूज द नॉलेज एंड विजडम to deal a specific life situation, and he knows how to make the balance between that. वो कहते हैं ना कि अकल का इस्तेमाल करें और दिल का इस्तेमाल करें. तो कहीं आपको अकल का इस्तेमाल करना तो कहीं दिल का इस्तेमाल करना, तो you have to maintain the balance between both. तो intelligent person know how to make balance different things. तो वो उसको ये होगा. तो इससे भी आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि विजडम है क्या, उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं.
Number 4 is well-intended and combines mind and virtues. So it also make connection between your mind and your thoughts and your virtues. कि एक तो आप सोचते हैं, चीज़ों को करते हैं, and then you apply all these things in real life in order to make your life virtuous. So if you want to lead a virtuous life, then you will use the knowledge as well and information in the direction you want to go. तो आपकी ये वर्चुअस लाइफ और आपके माइंड और थॉट्स और आपकी चीज़ों में ना ये बड़ा उसको कंबाइन करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझते हैं. और ये कब होगा? दैट इज ड्यू टू द विजडम. तो जब विजडम को अगर आपने इसकी मीनिंग को इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो फिर आप उसको वर्चुअस के साथ और उसके माइंड के साथ उसको कंबाइन करके आप अंडरस्टैंड करेंगे. Number 5 is very difficult to achieve but easily recognized. So wisdom, although is difficult to achieve, but you can easily recognize it. You can recognize the wise people. You can identify them. कि आप उनके you will observe a person and then you will tell that this person is a wise person. कि आपको पता चल जाएगा through observation and आप उनके कुछ एक सेंटेंस बोलता हुआ देख लें, आप उनका बात करते हुए देखें, बिहेव करता हुआ देखें, then you can say and you can identify the wise person among all. तो ये पता चल जाएगा कि 4 लोग बैठे हुए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. तो विजडम जो है वो that can be easily recognized, although it is not easy for someone to increase the level of wisdom. It is difficult task but not impossible. तो विजडम के मीनिंग को आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वाइज पीपल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको अचीव भी कर सकते हैं. You can increase the level of your own wisdom. You can also suggest other how to increase the wisdom. So how to be a wise person. ये हो सकता है, ये possible है. Now students, in this class activity you are required to differentiate factual and procedural knowledge with real life examples. You also have to give real life examples through which you can make a difference between factual and procedural knowledge. Students, you are being given 15 minutes to do that activity.